करें शुरू? हाँ जी. Hello everyone. I hope you can see me. I see a lot of you. Just give me a hi or yes, you can see me so that I know we are live. I see a lot of you have joined. So I'll quickly call out your names. Just give me a hi. Yes, you can see me so that we know we are live and I can start. Awesome. Awesome. Nisha, thank you for saying I am there. Just let me know if you guys can see me. Yes, you can see. Awesome. 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 Hey, so I have a lot of you joined in. Perfect. The best part is last time I said that there is a class on 2nd October. I was so excited for the class. And essentially that was a holiday. I also forgot that 2nd October is a holiday. And I said that tomorrow is a class. And most of you, I think, came on the chat box and then figured out ki chutti hai bhai. Right? And let me tell you, tomorrow is also a holiday. Tomorrow is Valmiki Jayanti. So tomorrow also we don't have a class. Today we have a class. And then next Saturday we have a class now. Okay. पहले से ही बता रहा हूँ so that there is no confusion. मैं भी आज बैठ के I saw the schedule. I'm so excited for the classes. मुझे लगता है every Saturday Sunday class है. But I then remember that this entire October is full of festivities. It's full of festivals, especially in India, right? Good morning to everyone who has joined. I see Adesh is there, Sagar, Nikita, Isha, Zeba is there, Rohini, Samir, Atharv, Prakhar is there, Surya, Sahil, right? Many of you there. I would not waste time calling out all the names, but I see a lot of you. Quickly, let's figure out what we were doing, right? Tell me what. So let us see who all of you have revised till now, okay? What were we doing in the last session? Tell me some concepts or some interesting things you learned in the last session so that I know you guys are revising. We were doing chapter 3. Itna basic answer mat dena ki chapter 3 pad rahe the, that I know we were doing chapter 3. But what in chapter 3? Kuch interesting se concepts or topics tell me that we have studied in chapter 3 so that I know you guys are revising. Awesome. Thanks for confirming, Sakshi, that you can see me. Good to know that. Awesome. Hey, Mahesh. The question here is, in last session, we completed almost the major chunk of our chapter number 3, which is organizations. Tell me some interesting concepts we discussed on. Let me see if you guys revised or not. कुछ interesting concept आपको पता चला, कुछ interesting चीज आपको पता चली. Special economic zone. Awesome. Investment banking. We talked 15 minutes on investment banking. Awesome. Indian companies, right? Suprabhat Mahesh. We were analyzing Indian companies, yes, but क्या interesting लगा आपको उसमें? Like a concept, a new thing that you figured out कि अच्छा ये भी होता है. Okay. SBI Act, awesome. You got to know that SBI is not a company. It is governed by its own act passed in the parliament, right? That is an interesting thing for sure. Awesome, Samir. Congratulations on the new phone. You did Indian companies. You came to know about investment bankers. Awesome. That is right. State Bank of India is having its own regulation. Yes. SEBI, SBI is 216 years old bank. Yes. Government companies and private companies. Public sector क्या है? Public company क्या है? इसका difference हमने पढ़ा था in depth, right? वो भी एक नई चीज है. You learned about companies, that is right. Nifty 50, unicorn, $1 billion, startups, right? ये सब नए concepts we studied about जो कि हम हर जगह पढ़ रहे हैं, but we did not know कि actually उसका मतलब क्या है, right? Good portfolio. SBI has unlimited. SBI सबको बड़ा पसंद आया, right? Media rankings, right? Yumanshi has a lot of rain at her place, so her good morning also has clouds. Cool. Bhumika is saying Indian companies about unicorns and about MD, CEO, investment banking. Who is a CFO? What is the difference between a chairman and a managing director, right? Great stuff there, right? I think these are the base things that are setting your base and super important for your career growth as well. You learned about difference of chairman, CEO, MD, director, and CFO, right, Diksha, right? Financial global ranking platforms like Forbes is there. Okay, financial global ranking and banking platforms. Learn about history of Flipkart. You learned about history of a lot of companies like Bajaj ke baare mein we studied. We studied about Asian Paints, right?
Awesome. Airtel is the big in Africa, not just South Africa, पूरे Africa में बरकतुल्लाह. Airtel is one of the biggest telecom companies even in Africa, which is an interesting thing we got to know, right? यही होता है जब नई किसी existing या नई कंपनी के बारे में you go and study. That is what you figure out that both these are so interesting businesses and we just saw the face of it. पीछे कितनी मेहनत लगी है, कितना time लगा है is hidden in the information, right? I'm good, Ankit. Hope you're doing good too. Tata Consultancy is a private company. No, sir. No, Simon, you're wrong. Tata Sons is a private company. Tata Consultancy is a public limited company. उसके shares है market में, right? In the share market, Tata Consultancy Services के shares हैं, and those shares means it's a public limited company. It cannot be a private company. But उसको own जो करती है, which is Tata Sons, that is a private company. That is a private company. Right? Cool. Nifty 50, you studied about the top 50 companies basis market capitalization. Market capitalization is share price into number of shares, right? वो हमने पढ़ा था. Again, very interesting new topic for you guys. Like as you go on to study about share market, shares क्या होते हैं, trading क्या होती है, Zerodha है, Grow है, you see all these ads, all these names. But then you start understanding. इसीलिए आपका base बन रहा है. This is why it is important, right? Power grid. 50% supply all over India power की Power Grid Corporation of India, right? Interesting thing. पूरे सोचो इंडिया की 50% बिजली वो लाके दे रहे हैं from hydro power plants और thermal power plants, इतने सारे poles लगा के. What a huge business, right? Complicated company like a Tata Group. Tata Group is a very complicated company for sure in terms of structure. Tata Motors is private or public? It's a public company. Conglomerate companies के बारे में पढ़ा. Companies which are doing businesses. I'm just revising all the concepts for you, okay? So anyone who missed anything or had a question, I think most of your answers will be answered right now. That a conglomerate company is a company which has varied businesses, unrelated धंधा होता है. Let's say, for example, a classic example of a conglomerate, right, can be Wipro. ठीक है, Wipro IT company भी है. It is doing information technology services. Wipro की ट्यूबलाइट्स आती हैं, Wipro के बल्ब आते हैं. Santoor, the soap that you use, or Miswak, that toothpaste that you use, right? Santoor साबुन है, Miswak toothpaste है, ट्यूबलाइट, स्विच बोर्ड, बल्ब्स, ये सब विप्रो के आते हैं. और आईटी कंपनी भी है. इट इज डूइंग अनरिलेटेड बिजनेसेस. बल्ब का आईटी से कुछ लेना देना नहीं है, साबुन का ट्यूबलाइट से कुछ लेना देना. द सोप और द टूथपेस्ट हैज नथिंग रिलेटेड टू अ लाइट बल्ब और अ ट्यूबलाइट और अ स्विच बोर्ड और एन आईटी कंपनी विच इज डूइंग क्लाउड सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. कोई रिलेशन नहीं है, बट स्टिल Wipro is doing all these works. Such companies which do unrelated businesses are called conglomerate companies, okay, or conglomerate businesses, right? Tata Consultancy is a subsidiary of Tata Sons? No, it is not a subsidiary. It is not a subsidiary. Interesting. पढ़ो इसके बारे में, गूगल करो थोड़ा. It's interesting. Tata Sons का structure is super important for a chartered accountant to understand. Saransh, YouTube pe I'm pretty sure the chats are paused or disabled for community purposes, right? Because we have a specific portal developed for students which is live.bos, right? At ICI TV that we have. So specific है तो वहां पे आके chat करेंगे. Interesting, right? Axis Bank, third largest private sector bank. Awesome. I think most of you have revised it or you retained as we studied, which is a good thing. Exam में यही help करेगा, right? याद रहना चाहिए, बाकी तो exam हो जाएगा. Can we now start with the global companies, right? We did Indian companies in chapter 3. We will very quickly go on to global companies. इसको 15-20 मिनट में खत्म करेंगे. And then we'll start with chapter number 4, which is also a very small but very interesting chapter from a different perspective. When I go to that, I'll tell you कि why is this chapter so scoring. Chapter number 4 में तो जितने questions आए, you should get 100 out of 100 in chapter 4. इतना simple और इतना छोटा सा chapter है, right? Is Adani Enterprise conglomerate? Yes, it is. Adani is also now a conglomerate.
राइट, अनरिलेटेड बिजनेस कर रही है, तेल, बिजली, पोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, अनरिलेटेड काम कर रही है. इट्स अ कॉन्ग्लोमरेट. any company, right, any company that you have which is doing unrelated business is a conglomerate. Okay, last Sunday we did not have a class, Hadia. It was 2nd October. I also missed it. इतना excited class के लिए कि मैंने कहा हाँ कल class है, but it was a holiday. Similarly, कल भी छुट्टी है. Tomorrow also we do not have a class. Now we directly have a class on 15th, which is a Saturday, next Saturday. ठीक है? Cool. You have to remember the ranks of the companies in Forbes. Yes, major companies, major banks का तो जरूर. PSU का I can tell you ज्यादा जरूरत नहीं है. You can be lenient on the PSU, which is public sector government companies की ranking, but जो banks की ranking है, right, especially उसको जरूर याद रखना. Majorly asked. तो देखो प्राइवेट सेक्टर आपकी गवर्नमेंट कंपनी की भी सकती है, बट चांसेस कम होते हैं, राइट. Larsen and Toubro is a conglomerate, more or so, yes. More or so, yes. You're right. Good news, Atya, right? That tomorrow is a holiday is a good news for sure. Sunday relax करेंगे, एकदम छोले भटूरे आलू पूरी खाएंगे. Cool. Can we now go to the global companies? Give me a yes, give me a thumbs up, be active. Let's get to global companies. 15-20 मिनट में इसको खत्म करके chapter 3 भी close कर देंगे. Can we go to the foreign companies? We'll come to that, भूमिका. Foreign में घुसने तो दो अभी. We are starting foreign companies and तब बताएंगे वो प्राइवेट लिमिटेड लेती है, प्राइवेट कंपनी लिखते हैं या पब्लिक कंपनी लिखते हैं. Give me a yes, give me a thumbs up if we can go to the global companies. Awesome. Okay, I got so many thumbs up. मजा आ गया. Cool. So let us go to the global companies, an overview of selected global companies, what we'll cover now. और सबसे पहले आप देखोगे वे starting with Amazon.com and the name के पीछे private limited नहीं लिखा है, limited नहीं लिखा है. What they have written is called INC, which is Inc. Okay, Amazon.com Inc. Now, what happens in US is जो हमारे यहाँ पे public listed company है, okay? A company which in India is called public listed. Public company है जिसके shares are there on the share market. We call it a public listed company. US में, in the United States of America, they call it incorporated, right? Incorporated. और उसका short form जैसे हम limited का LTD कर देते हैं, वो incorporated का INC कर देते हैं. Okay, so in US what happens is incorporation, incorporated interchangeably use होता है, right? It's majorly incorporated, incorporation भी use कर लेते हैं बोलचाल की भाषा में, okay? But INC is basically a public listed company जिसके shares US की share market में हैं, उसको INC लगाते हैं, ठीक है? Amazon.com INC, which is Inc. Okay, cool. Now quickly we know who is the founder, Jeff Bezos. Amazon करता क्या है, मुझे ये बताओ. Quickly tell me, ये छोड़ते हैं Amazon करता क्या. Don't tell me what Amazon does. Tell me, INC I just told Sameer, incorporated. Okay. Now, Amazon के कुछ products बताओ मुझे. Give me names of some products of Amazon. Okay. I know you will study the study material. You will learn this. You will learn the names and dates and the headquarters and everything. We have already discussed. ये तो पढ़ना ही है. But let us quickly tell me, Amazon के कुछ products बताओ. Amazon क्या क्या बेचता है? Not on the website, but Amazon के खुद के products. For example, Amazon Echo, correct? That is nice. Kindle, the reading tablet that you have, awesome. Online products तो बेचता ही है. E-commerce company, it is there. Amazon is an online retailing store. That is right. It sells goods online. That is right. Which is an e-commerce company, right? It's an e-commerce company. But what are its products? Like Amazon Echo, right? Himanshu, that is right. Then you have Kindle. What else? और क्या है? इतना कुछ तो है अब Amazon का. Amazon Prime, Amazon Video, live streaming, Alexa, right? Alexa है वहाँ पे. Amazon Fire Stick, awesome. Amazon share. Do we have Amazon shares in India? No, Manvi. It's not listed in India, so you can buy, but not in India. वो न्यूयॉर्क में listed है. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे अपना यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, यूएस में इट्स कॉल्ड NYSE, which is New York Stock Exchange. NYSE, New York Stock Exchange. NYSE. Okay, so that is where those shares are listed.
Amazon started with books. That is right, Darshan. Good on the history. Alexa, Kindle, Amazon Prime Video, web services, e-commerce, Echo, App Store is there. Amazon Music is there. Fire Stick, Amazon Prime, right? Prime TV, Prime Video, Alexa, Prime. Harnoor is saying Prime Video with an Italian hand, right? Okay. Then we have Prime Music, Fire TV, App Store is there, consumer electronics, clothes, music, ठीक है, e-commerce, Prime Video, Wall Street Exchange. अच्छा, Wall Street Exchange, Manvi, that's right. Wall Street is basically वहाँ की share market. जैसे हमारा दलाल street है. If you go to Mumbai, there is a road where there is Bombay Stock Exchange, उसको बोलते हैं दलाल street. वैसे ही US में है जिसको बोलते हैं Wall Street. Okay. Amazon Prime, then beauty products, App Store, music, awesome, right? That is what the portfolio is. ये देखो, यहाँ पे नीचे चलते हैं, ये देखो, the portfolio, Fire Stick, Video, Kindle, Music, Amazon Digital, Echo is there, Drive, App Store, Alexa, Web Services, Prime, Fresh, सब पता है हमें. Now the interesting thing that we have in this syllabus is कि ये भाई इंडिया में क्या कर रही है और कब आई. Okay. Now, essentially, the more focus area for all the global companies, when you're studying chapter number 3, listen to this very carefully. When you're studying chapter number 3, the area of focus for all the global companies should be when did they come in India. ठीक है. Amazon India में 2012-13 में, it came in India in 2012 and 13. Headquarters are in Hyderabad. Present CEO Amit Agarwal, CFO Raghav Rao. Okay. Now these are Indian operation. India, Amazon India के CEO, Amazon India के CFO, Amazon India का headquarter, Amazon India में कब आई? Right? This is more important. ऊपर वाला part is also important. Okay. Now these names and dates are important, but more important is India operation of all the global companies that we are going to cover in the next 15 minutes. Okay. Right. Broker Street better, but Dalal Street थोड़ी हिंदी होनी चाहिए ना, हर चीज थोड़ी ना इंग्लिश कर देंगे. It should be called Dalal Street. UPI transaction services, Amazon Pay, right? You're right. Amazon Pay है, Amazon Fresh, सब्जी फल बेच रहा है, right? So Amazon's operations in India, that is more important. Headquarters in Hyderabad, CEO Amit Agarwal, CFO Raghav Rao. Okay. Now, the philosophy is they want to be the Earth's most customer-centric company. Customer is the king or queen for Amazon. Okay? Customer is the king or queen for Amazon. They say our aim is to be the Earth's most customer-centric company. Okay? The portfolio हमने पढ़ लिया है, and we know how to study the chapter henceforth, right? विजेंद्र पूरा तो हिंदी में बता रहा हूँ, और क्या हिंदी में जानना है आपको, right? I'm trying to cover both English and Hindi. क्या रह गया बताओ? Wow, Hadir, you're from Hyderabad and you didn't know that headquarters in Hyderabad. Go to High Tech City. High Tech City in Hyderabad, you have Google, you have Meta, which is Facebook, you have Microsoft, you have Amazon. The top 4 companies for engineers, for chartered accountants, finance people to get a job are there in Hyderabad High Tech City. You should go and visit that. Kal Sunday hai, ghum ke aao zara ek bari. Right? Okay. Let's go to the next one. Next one is American Express. फटाफट से मुझे बताओ, what does American Express do? American Express करती क्या? नाम तो सुना होगा, for sure. You would have heard the name, I'm pretty sure. What does American Express do? Adi, I've been to Hyderabad. I've been to Golconda. I've been to Shagho's Biryani. I've been to Charminar. I've been to that place behind Charminar, which is a palace. I've been to Hyderabad. The question is, what does American Express do? फटाफट से मुझे बताओ. Banking, credit card, financial services, courier service. नहीं दोस्त, वो अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं है. कोरियर सर्विस वो दूसरी है. नेत्रा दैट इज नॉट योर कोरियर सर्विस. वो तो फेडेक्स है. ये तो अमेरिकन एक्सप्रेस है. इट्स अ न्यूज चैनल. नहीं, अमेरिकन एक्सप्रेस इज नॉट अ न्यूज चैनल. इट्स अ फाइनेंशियल सर्विस, क्रेडिट कार्ड, फाइनेंशियल. जैसे अपना यूपीआई है ना, थिंक ऑफ इट एज अ सिंपल थिंग.
American Express essentially started as a transactions facilitation company. Okay, जैसे अपना UPI है, जैसे अपना Paytm है, American Express वैसे start हुई थी. Then they came out with an interesting concept of credit cards. Okay, they started something called as credit cards, and वहां से it started its operations. It became so big. Now, if you look at the date when this was started, okay, more like a credit card brokerage company, financial services, loan देती है, loan लेती है, financial transactions को it helps. So between a customer and a bank, who is providing the transaction software? American Express. ठीक है. If you अब जैसे देखते हो कार्ड करते हो, मास्टर कार्ड है, वीजा का कार्ड है, राइट? कार्ड तो HDFC बैंक का है, बट दे से द कार्ड का ट्रांजैक्शन सर्विसेज कौन दे रहा है? इज इट अ वीजा HDFC कार्ड, और इज इट अ मास्टर, और इज इट अ रुपे? India में we also have that RuPay, right? RuPay card. Then we have UPI in India. So all these are financial transaction services जो एक बैंक and between a customer they act as an agent to fulfill that entire transaction कि आपके बैंक से निकलेगा, किसी और के बैंक में जाएगा, ये पूरा system is taken care by these companies. Okay. Now, the interesting thing about this company is look at when was it started. 1850 में start हुई थी. Which is almost 170 years. 170 साल पहले ये company start हुई थी. Okay, 170 years is what this company was started like in 1850. Interesting thing again about this company is in India में देखो, India में it came, its first office in India was 1921 in Kolkata. 1921. दोस्त हमें इंडिपेंडेंस मिलने में भी अभी 30 साल है. We got into 1947, we become republic in 1950. उससे भी 30 साल पहले this company came into India. Think about this. Think about this, how old or how futuristic this company is. 1921, it opened its office in Kolkata. इंडिपेंडेंस से पहले, रिपब्लिक होने से पहले इंडिया के 30 साल, it started its services, it started its like operations in India, right? Now, it was started in 1850 as an express mail business in New York. What someone was saying, it was a logistic company. It started as an express mail. It is no longer an express mail right now. Okay, बंद कर दिया इन्होंने वो वाला काम. It was founded as a joint stock corporation by the merger of express companies owned by Henry Wells, William Fargo, and John Warren Butterfield. Okay. Now, the philosophy is to be the leading provider of payment solutions worldwide. जो हम बोल रहे हैं UPI, Paytm जैसे इंडिया में है, US में ऐसे अमेरिकन एक्सप्रेस है. Okay, same thing what UPI does for us, what a RuPay card does for us, exactly what is American Express does in America. ठीक है, cool. बाकी I know you would study card products, non-card products. So card products means travel cards होते हैं, you have diner cards, you have credit cards, debit cards, this card, kids insurance card, kids fees card. हजार तरीके के कार्ड बना के ये लोग लोगों को क्रेडिट देते हैं. They give loans, they give credit to people to earn interest income. ये लोग interest income कमाने के लिए लोगों को क्रेडिट देते हैं through a process called cards, जैसे credit card, traveler card. If you want to travel, so what I'll give you a classic example out of syllabus just for your understanding, right? It's limited. It's not even limited घूमेगा. US में तो limited private होता ही नहीं है, incorporated होता है. ठीक है ना? Inc होता है ये. Right? It's an incorporated company. इसके shares हैं US stock market में. Okay? US में तो अपना limited private जैसे concept ही नहीं है, वहाँ तो incorporated ही होता है. Look at this. There's an information bubble also. आप लोग syllabus पढ़ोगे, everything is given for you. Everything is given in the book for your guidance, right? See, for example, INC or corporation or corp or LLC used in United States to denote public company. अभी आप जर्मनी में जाओगे, if you look at a German company or if you go to Germany, they call GmbH, okay, which is Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Okay, I know a little bit German also, but it is used in Germany to denote a company which has a limited liability. ठीक है, GmbH is what Germany में, जैसे हमारे यहाँ पे limited है,
यूएस में आईएनसी है और जर्मनी जाओगे तो जीएमबीएच है. ओके, दिस इज हाउ थिंग्स आर. नॉन कार्ड प्रोडक्ट्स लाइक पब्लिशिंग एंड इंडिविजुअल बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजरी, लोगों को एडवाइस भी करते हैं आप कहाँ पैसा लगा सकते हो, वे यू कैन इन्वेस्ट. इट्स एन इंटरनेशनल बैंक. You have an American Express card in India. You go to Dubai, it will work. You go to US, it will work. You go to Singapore, it will work. You go to China, it will work. Any country you go using an American Express card, the card will work for you. Why? Because it's an international card. It's an international operated card. So that card will work in every country you go. Okay? Cool. I think you understand the concept of financial services a little now. Why can't it come, Ankit? Before, so it's an interesting question from Ankit. He says, independence is closed economy. Independence से पहले हम लोग closed economy थे, Ankit. I think we weren't a closed economy. East India Company थी यहाँ पे. They were British people. जब British थे यहाँ पे तो closed economy कैसे थी? After independence, we were a closed economy. ठीक है? After independence, we were a closed economy, दोस्त. Independence से पहले तो ब्रिटिश थे, उन्होंने तो पूरी इकोनॉमी खोल के रखी हुई थी. हमसे सामान लेके they used to sell in Afghanistan, in Europe. यहाँ से पूरा इंडिगो, कॉटन, टी, they used to produce everything in India and sell it in Europe. इससे ज्यादा ओपन इकोनॉमी क्या होगी? Cool? Okay. Visa, Rupee. So Rupee is an Indian product. Visa is a US का product. So US में Visa तो है. LLC, did it mean Limited Liability Corporation? Yes, that is right. What are the asset management companies and how do they work? Adish, asset क्या है? Investments are assets only, right? Asset management company का मतलब क्या है? Investment आप balance sheet में investment को कहाँ डालते हो? Asset में ही डालते हो ना? Same काम है. Correct. Simon says it was a stagnant economy, not a closed economy. That's an interesting thing. Financial advices services देते हैं, उसके बदले में क्या लेते हैं सर? Service fees. जैसे chartered accountant लेते हैं. If you become a chartered accountant, if someone and asks you for tax advisory, क्या पैसे कैसे कमाओगे? Same. It's Gesellschaft mit Beschränkter Haftung. ये जो श है, श. So in German you use a lot of sh, okay? Gesellschaft, it's SCH sh हो जाता है वो. जो अपना हिंदी में श है ना, वो यहाँ पे आ जाता है. Google, LLC, Apple Inc. Absolutely, you're getting everything right, Himanshu. समझ आ गया अब आपको क्या हो रहा है, right? Why? Like Google is LLC, Apple is Inc. They're the kind of companies that is the kind of organization structure they have. That is what they want to keep their company as. Chapter 1 में पढ़ा था ना, प्राइवेट. आप प्राइवेट लिमिटेड हो सकते हो, आप LLP बना सकते हो, आप LLC बना सकते हो, राइट? वन पर्सन कंपनी, डोमेंट कंपनी, सब कुछ पढ़ा था. लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन में LLC, जैसे LLP is limited liability partnership, limited liability corporation और limited liability company बोल दो आप उसको, but corporation is the right word. Limited liability corporation is LLC, right? Okay, let's go to the next one, which is Apple. Okay, Apple के बारे में तो क्या ही पढ़ना. Product, we know what Apple does, we know how Apple started, right? Vision to produce high quality low cost. ये क्या बात है? ये कैसा vision है? ये तो विजन ही मैच नहीं कर रहा है. टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी लो कॉस्ट, ये तो मजाक कर दिया एप्पल. एप्पल इज सेइंग लो कॉस्ट. ओके, इजी टू यूज प्रोडक्ट्स टू इनकॉर्पोरेट हाई टेक्नोलॉजी फॉर एन इंडिविजुअल. चलो, हाई क्वालिटी वी कैन अंडरस्टैंड, इजी टू यूज प्रोडक्ट्स वी कैन अंडरस्टैंड. ये तो मुझे समझ नहीं आया, ये विजन में लो कॉस्ट कैसे आ गया, राइट? Apple is committed to bringing the best personal computing experience to student educators and creative individuals. Okay. Products of Apple क्या है? जैसे Mac, iPad, iPhone, you have Apple Watch, Apple TV, Apple Music, right? AirPods, now you have AirPods and headphones and everything. So we all know what Apple products are, right? ज्यादा कुछ है नहीं एप्पल में पढ़ने का. रिमेंबर द नेम्स. वी नो टिम कुक CEO, CFO इज लुका मेस्त्री and it was incorporated 1977, California, United States. Okay, awesome.
Let's go to the next one quickly. Goldman Sachs Group, INC इन लिखा है, ठीक है. गोल्डमैन सैक्स क्या करता है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है. इट्स एन इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक. इट इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक. इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है? लास्ट सेशन में वी हैव स्टडीड इन डेप्थ. पूरा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होता है, राइट? व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक डू, हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं in the last session. And Goldman Sachs is the world's biggest investment bank. Okay, started in New York City. New York में start हुआ था 1869 में by Marcus Goldman. ठीक है, 1869 में. ये भी almost 150 साल पुराना, 150 years old. Okay, in 1882 इनके दामाद, son-in-law Samuel Sachs joined the firm और तब नाम बन गया Goldman Sachs. Okay, the mission is they are committed to a distinctive culture and set of core values. These values are reflected in our business principles, which emphasize placing our clients' interest first, integrity, commitment to excellence and innovation, and teamwork. I think we have studied with example कि इन्वेस्टमेंट बैंक करता क्या है. आई इवन गिव यू अ क्लासिक एग्जाम्पल कि आम दुनिया में इन्वेस्टमेंट बैंक के पास कैसी ट्रांजैक्शंस आती हैं और वो कैसी ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट? वी हैव स्टडीड दिस. प्राइम ब्रोकरेज, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, सिक्योरिटीज एसेट मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग, प्राइम ब्रोकरेज, बिग टर्म्स यू विल स्टडी एट इंटरमीडिएट लेवल. ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं आएगा इससे कुछ क्वेश्चन. दीज आर जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Okay. Oh, is it? Sami, that's an interesting thing you're telling me from history of India. I'll remember this. Let's go to the next one. HP. काफी लोग अभी if you're looking at watching this session on a laptop, your laptop might be from HP, right? HP का full form क्या है? मैं छुपा देता हूँ इसको. Let me see if you know what is the full form of HP. HP का फुल फॉर्म क्या है? पूरा नाम क्या है HP का? हरि प्रसाद, हरीश पांडे. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश. कूल फैजान इज यूजिंग डेल. वो कह रहा है HP यूज नहीं करता हूं मैं, मेरे को डेल बताओ. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HP? Awesome. A lot of you saying Hewlett-Packard, right? Which is the right answer. Hewlett-Packard is an American multinational information technology company, right? 1939, California. Chairman is Chip Berg and Enrique Lores, okay? And CFO is Mary Myers. Now, company की history started from a car garage, right? जैसे अपना रोशन सिंह सोडी है तारक मेहता में, वैसे कार गैराज से इन्होंने अपनी कंपनी शुरू करी थी. एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, राइट? दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट लैपटॉप एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज. दे आर हार्डवेयर, दे प्रिपेयर हार्डवेयर, दे मेक सॉफ्टवेयर, सब कुछ करते हैं ये लोग, राइट? HP की एक और USP which is unique selling proposition, one of the biggest and the most famous products of HP is printers. HP के printers are also like Hindustan Petroleum, ये नया है HP, that is also nice. So HP के printers are one of the most used printers across the globe, right? I think they're the leaders in printers. And laptops तो हैं ही, information technology तो है ही, but they also advertise their printers a lot, right? HP के जितने भी आते class project बच्चे कर रहे हैं, you watch those advertisements on television, right? Printers, anything related to printers comes into examination, just know it's talking about HP. ठीक है? Cool. IBM, International Business Machine Corporation. पहले इसका नाम ये था, राइट? आई थिंक अभी इट्स ओनली कॉल्ड IBM. अच्छा, IBM अपने आगे कॉर्पोरेशन लगाता है, INC नहीं लगाता है, ठीक है? IBM अपने नाम के आगे कॉर्पोरेशन, इट यूजेस कॉर्पोरेशन, इट डजंट यूज INC, but one and the same thing. Okay, in US you can use any. If you want to write a corporation, you write a corporation. If you want to write INC, you write INC, right?
CEO is Arvind Krishna, an Indian person, an Indian origin. I wouldn't say an Indian though. An Indian origin person is the CEO. Indian तो वो रहे ही नहीं. 50 साल से US में तो Indian कहाँ से हैं? Right? So Arvind Krishna is the CEO of IBM and CFO is James Kavanaugh. Okay. IBM operates in over 170 countries across the globe. भाई 195 तो total countries हैं I think पूरे world में. And 170 countries में they are operating IBM. Okay. Now Pratik has an interesting HP का full form is हमारे पापा. वाह. कंपनी का नाम यही होना चाहिए. हमारे पापा हमें पैसे देंगे. That is a wonderful company. Let's get to IBM now. Okay. International Business Machines Corporation. Right. IBM करता क्या? मुझे कोई बताएगा? IBM करता क्या है दोस्त? IBM का काम क्या है? What does IBM do? आपको क्या लगता है IBM क्या करता है? There is no difference, Mohammed. Rehan, there is no difference between आपका corporation and INC. Same है, confuse होने की जरूरत नहीं है. ये HP खत्म ही नहीं हो रहा ना. साक्षी has come back with हार्दिक पांडे. हार्दिक पांडे नहीं, पंड्या है वो. हार्दिक पांडे तो आपको पॉलिटिशियन है क्या? वो दूसरा है. That is Hardik Pandya, if you're talking about that. Software. Washing machine. IBM की वॉशिंग मशीन कहाँ देख ली दोस्त? IBM की वॉशिंग मशीन भी आती है. आई एम नॉट श्योर. मशीन बनाता है IBM. कौन सी मशीन? स्टिचिंग मशीन बनाता है, क्लीनिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर बनाता है. क्या बनाता है? सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर सर्विसेज. IBM आपको याद है? अब IBM की चिप्स होती हैं अंदर. कंप्यूटर के अंदर चिप होती है IBM की. राइट. फ्लॉपी डिस्क, ATM मशीन्स. IBM invented the ATM machine. ये देखो, inventions by IBM include ATM. जो ATM मशीन पूरी दुनिया में लगी हुई है, that is an invention of IBM. Computer hardware. IBM की washing machine आती है दोस्त. That this is fully automatic washing machine. I wasn't sure. This is a news to me. IBM की washing machine भी है. Okay, that's good. Hardware, okay. SQL programming language, data center migration. और बाप रे, इतना भारी words. Data center migration, okay. Consulting service, UPC, barcode. इतने technical चीजें. वाह. You guys are asking questions like what is the difference between INC and corporation? And when I ask you questions, your answers are like data migration, technology upgradation. बिल्कुल ही इतना high level versus your questions are एकदम easy. Okay, chips, floppy disk, sale करते हैं. Okay, IBM. What is IBM? Abhinav, awesome question. We are studying about global companies. IBM is a samosa chart center. Those global companies कर रहे हैं. IBM global company है. Motherboards, industry expertise, okay. IBM, IFB, confuse कर दिया दर्शन. Okay. What is meant by middleware? Software, hardware के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं middleware. MS-DOS was invented by IBM. MS-DOS का मतलब है Microsoft DOS. Microsoft DOS IBM ने किया था. ये तो पढ़ना पड़ेगा दोस्त. ऐसे तो आई हैव नो क्लू. ओके. IBM इन इंडिया. IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. अभी देखो ध्यान से. इंडिया में IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड is the Indian subsidiary of IBM Global. Sandeep Patel is the managing director of IBM India Private Limited. IBM entered in India in 1992 with a Tata joint venture named Tata Information Systems Limited. है ना interesting? Tata IBM को इंडिया में लेके आया with a joint venture. In India, IBM is a private limited company, but its joint venture with Tata is a limited company.
IBM in India is a private limited company, but उसने एक joint venture किया टाटा के साथ और उस joint venture को इन्होंने limited बना दिया. That means it is a limited, public का पैसा लगा हुआ है उसमें, right? IBM को full form syllabus में ही दिया हुआ है. International Business Machines Corporation. Okay. Cool. Let's go to the next one. Interesting है. पढ़ोगे आपको सब कुछ समझ आएगा. IBM कितना कुछ करता है. It's not just about floppy or disk, but it is an innovation company. If you look at it, IBM is actually doing a lot of innovation, right? Like cloud computing, cognitive sciences, commerce, Internet of Things, IoT. One of the biggest businesses in the world right now, which is called IoT, which is Internet of Things. पढ़ो दोस्त इसके बारे में. सिर्फ इंस्टाग्राम पे don't keep watching girls and boys dancing or emo boys making memes. Study about these things which are going to help you in the future. थोड़ा टाइम मतलब ये नहीं सिर्फ यही पढ़ते रहो, वो भी जरूरी है, but you should be aware of what is happening in the world. I'm pretty sure if anyone, so does anyone know what is Internet of Things? Let me just ask you, what is Internet of Things? कभी सुना है? And this is like you're 18, 19, 20 years old. You have 50 more years to work. और अगर आपको Internet of Things नहीं पता है, though it's going to be difficult for you to survive. This is the future. Let me see and ask you, does anyone know what is Internet of Things? क्या होता है Internet of Things? No, you don't know, right? You should know. That is why syllabus में हर चीज समझाई नहीं जाएगी, but it will tell you what needs to be searched and studied. थोड़ी सी मेहनत out of syllabus करोगे, it's going to help you, okay? You're not using Insta from 2 months, तो फैजान बताओ what is Internet of Things? 2 महीने से Insta use नहीं कर रहे हो तो कहाँ time waste कर रहे हो, देखते हैं. You have heard some Internet of Things. What is Internet of Things? होता क्या है ये? Freelancing? No. Doing business over internet? No. What is Internet of Things? बहुत interesting topic है. And on this, you should build your career even in finance, dost. Figure out what companies are working on Internet of Things. Right? Devices connected through internet to communicate, Manvi. What a Google copy paste. जबरदस्त कॉपी पेस्ट किया आपने गूगल से, बट मेरे को एग्जांपल से समझाओ. व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? लेट्स अंडरस्टैंड. लेट्स स्पेंड 2 मिनट्स. बहुत टाइम है अपने पास, कुछ नया पढ़ लेते हैं आज, राइट? बियॉन्ड सिलेबस. व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स? एक एग्जांपल दो, ठीक है? द डेफिनेशन इज राइट. नेटवर्क ऑफ कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट टू कम्युनिकेट. बट दोस्त ये यूज कहाँ हो रहा है? मुझे बता, एक एग्जांपल बताओ. यू आर यूजिंग इट in your daily life, abhi bhi, right now you are using Internet of Things, but कैसे बताओ? रेफ्रिजरेटर कार में होता है, IoT हर जगह होता है दोस्त. Wi-Fi, Instagram, no, these are not Internet of Things. नहीं. Social media is not Internet of Things. Hotspot Wi-Fi नहीं. Interconnection via Internet of Computing devices embedded in everyday objects, enabling them to send and receive data. जबरदस्त Google copy paste, but इसको समझते हैं, ठीक है? Let me explain you with a very basic example, ठीक है? 2 एग्जाम्पल लेंगे, Internet of Things आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? Now, if I tell you these big companies like Amazon, Flipkart, Meesho, right, or HUL, Tata, ये सब इतनी बड़ी companies हैं. Now let's say even in Flipkart के पास मान लो 50,000 iPhones का स्टॉक है, okay? Now be very careful what we are talking about. ध्यान से समझो what is Internet of Things, okay? Flipkart has 50,000 iPhones का स्टॉक in 10 warehouses. 10 warehouse है पूरे इंडिया में. 2 in North India, 2 in South India, 2 East, 2 West, 2 in Center.
सेंट्रल इंडिया, ठीक है। 10 वेयर हाउसेज है टोटल में, इट हैज 50,000 आईफोन्स का स्टॉक। ओके, नाउ what happens when a person sitting in Bihar, a person sitting in Patna, in their house somewhere in Patna, अपने घर में थर्ड फ्लोर पे बैठ के on their phone through their app they book an iPhone on Flipkart? What happens? कैसे क्या होता है? ये information, the information that somebody wants to buy an iPhone in पटना का एक छोटी सी लोकेलिटी इन सम थर्ड फ्लोर पे, ये बंदा इस एड्रेस पे बैठ के ही और शी वांट्स एन आईफोन, ये इंफॉर्मेशन उस ऐप में यू गो एंड से बाय नाउ, करेक्ट? नाउ दिस इंफॉर्मेशन गोज टू द सर्वर, goes to Flipkart ka server, which is, let's say, in Haryana. Okay, Haryana servers figures out ki, okay, which is the closest warehouse to this address. It contacts internet से, सब internet of things है, it gives that information to and figures out सबसे पास warehouse कौन सा है. It figures out the closest warehouse is in Assam. Okay, Assam में सबसे closest warehouse है and it figures out कि असम के warehouse में 5,000 iPhones थे, 3,000 बिक चुके, 2,000 बचे हैं, ठीक है, उसमें से एक बुक कर दिया for this person. Now this information goes to Assam warehouse that one iPhone out of the 2,000 left with you is to be sent to this place. Then वो warehouse में information आती है, that warehouse में एक आदमी computer पे बैठे हैं, they figures out, okay, this has to go there, they start packing, they put it on the truck, barcode scan करते हैं, barcode scan करके आप track कर सकते हो, you on your app can track where that particular thing has reached. ये सब कैसे हो रहा है दोस्त? ये सब कैसे हो रहा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हो रहा है. ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड, योर सेल फोन इज कनेक्टेड टू फ्लिपकार्ट का पूरा सिस्टम. सोचो, योर फोन इज कनेक्टेड टू दिस एंटायर सिस्टम. सो इफ यू बाइंग समथिंग राइट अवे, राइट, एंड यू रिफ्रेश इट, ऐप पे लिखा आ जाता है आउट ऑफ स्टॉक. All the devices are connected. Your phone is connected to Flipkart server and it knows you want to buy, let's say, a pair of shoes of 6 number or 7, 8, 9, कुछ भी आप size का लेना चाह रहे हो, वो out of stock है. Instant information, Internet of Things. कौन बना रहा है ये पूरा system? One of the companies doing this is IBM, and this is called Internet of Things. Internet of Things means every device around you is connected. I am sitting at my place looking into my camera in this laptop जिसके पीछे कुछ नहीं है, ये सिर्फ लैपटॉप है. There is a Wi-Fi का राउटर है, राउटर के पीछे तार है, तार जा रही है बॉक्स में, वहां से वो सर्वर जा रहा है. It is going to everyone across India. Same real time with my voice. मेरी आवाज जैसी आपको वैसी ही सुन रही है, right? It is not like if someone else speaks, उनकी आवाज आपको अलग सुनाई देगी. Now think how good this technology is. You can even hear my voice as it is. ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन सबकी आवाज सेम सुनती है, क्योंकि ये तो तारों के बीच से होके आ रही, हवा में से आवाज आपके पास पहुंच रही है, right? This is what Internet of Things is. It is a fantastic technology, and that is why all these top engineers are paid so much. If you sit down to think, यार engineers को इतना पैसा क्यों मिलता है? Why are engineers so valued? Because they're creating these things. You and me have not studied this, so we are not creating, which is as simple as that. But these guys are creating these things, and which is so interesting, right? कैसे possible है यार? ये तो मतलब I sometimes get like paranoid कि ये कैसे possible है? Real time, same voice, same everything to everyone in the world, free of cost. कोई पैसा नहीं है, फ्री बेच रहे हैं, क्यों? राइट? दिस इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स. ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है? यू गेट इट, बट यू गेट इट. लाइक ऑल दीज टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग. इफ यू वांट टू स्टडी योरसेल्फ, गो एंड सर्च, थोड़ा पढ़ो इसके बारे में, यूट्यूब वीडियो देख लो दोस्त. कोई नहीं कह रहा किताब पढ़ो, watch some YouTube videos, even that will help. Let's go to the next one, which is Intel. Intel inside every laptop which has a Windows software has this thing on their laptop near your keypad or touchpad. You will have this Intel inside. Intel is making
the computing chips. Okay, it's a multinational American company which is creating. Intel supplies processors for computer systems manufactured like Apple, Lenovo, HP, Dell. इन सब के कंप्यूटर्स में जो माइक्रो प्रोसेसर्स लगे हुए हैं, राइट, द प्रोसेसर जो पूरा कंप्यूटर चला रहा है, दैट इज मेड बाय, दैट इज डेवलप्ड बाय, राइट, दैट इज डेवलप्ड बाय इंटेल, right? ICI BOS app is Internet of Things. Yes. Yes. Home to home delivery. Yes, it's Internet of Things. Your devices are connected. Zomato पे आप ट्रैक कर सकते हो, ये मोटरसाइकिल दिखता है आपको, एक आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, उसकी ऐप में दिखता है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स दोस्त. दैट पर्सन्स सेल फोन का जीपीएस ट्रैकिंग इज in your phone live, right? That your devices are connected somehow. आप कितना भी कहो, there is privacy, my phone is, मैंने कोई कुछ नहीं किया हुआ, I've closed all the apps and everything, but your devices are connected. आप Zomato पे, आप Swiggy पे जाते हो, वो मस्त मोटरसाइकिल दिखती है आपको ऐप में, ड्राइवर आ रहा है, they have checked their temperature, they have picked up, now they're cooking, now they're traveling, 5 minutes रह गए हैं, 3 minutes रह गए हैं, right? That is Internet of Things. Rajab, Abhinav, take care of yourself. If you're in fever, that means you're hot today. ऐसे मैं तो ऐसे ही करता था. I used to crack this joke every time. Whenever you have fever, that means you are hot. सिर्फ for that day. ज़्यादा खुश मत होना. Only for this day, ठीक है? Intel makes microprocessors, ठीक है? You know what Intel does. We know what Intel does. It's a semiconductor. It's a processor company जो हर computer, हर laptop के अंदर होता है. Right, couple of products that they have like networking, communication, ether port, fabric products. Then they have cellular modems or software gateways. बहुत technical है, याद रखने की जरूरत नहीं है. अभी एक question है, what is this TM and what is this R? R means registered, ठीक है? TM means trademark. That means सिर्फ ये ही नाम यूज कर सकते हैं Intel. आप कल को अपनी एक कंपनी खोलोगे एंड इफ यू कॉल योर कंपनी एज इंटेल, ये आपके ऊपर केस कर देंगे, बिकॉज दे से वी हैव रजिस्टर्ड दिस नेम. इंटेल नेम इज रजिस्टर्ड ग्लोबली. ये हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है दोस्त, आप नहीं यूज कर सकते इसको, राइट? द सेकेंड थिंग इज कॉल्ड ट्रेडमार्क. इन्होंने ट्रेडमार्क ले लिया. दैट मीन्स इंटेल कोर, द वर्ड कोर फॉर अ कंप्यूटिंग ओनली इन कंप्यूटर. आप बाकी जगह कोर वर्ड यूज कर सकते हो, बट व्हेन यू create a similar product in computing, you cannot use the word core. आपको कुछ और करना पड़ेगा. That is why you see phones के अंदर. Now think, अभी क्या देखो, everything is around you, you just have to understand. एक होता है स्नैपड्रैगन, ठीक है? स्नैपड्रैगन प्रोसेसर फोन के अंदर आता है. एक आता है एमटेक आता है, राइट? देन देयर आर मल्टीपल अदर्स. सेम चीज का अलग अलग नाम है, राइट? एंड दोज आर ट्रेडमार्क्स. नाउ अ कंपनी व्हिच इज मेकिंग स्नैपड्रैगन cannot use the word Amtech. The company which is creating Amtech cannot use the word Snapdragon. That is their intellectual property. अब you can not just go and अब आप एक मान लो what is a trademark or a copyright. Simple example is you want to start a game show TV पे, आप उसका नाम रख दो कौन बनेगा करोड़पति, KBC रख दो उसका नाम. You cannot, right? That is their intellectual property. उनके brand value है. They will come and sue you. They will take you to court saying कि यार आप same नाम कैसे use कर रहे हो? We have registered this name. This is our intellectual property. कौन बनेगा करोड़पति? You cannot use that name, right? इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट दैट इज योर एसेट. Qualcomm, right? Qualcomm is processor. Thanks, Pratik. I hope you're getting the concepts right. Essentially, my only point in this chapter number 3, देखो simple है. You will learn everything. My point is to tell you what you will not know. ठीक है? जितना मुझे पता है मैं उतना बता दूंगा. I don't know everything, obviously, but जितना पता I'll tell you. Let's go to the next one. Microsoft. यार Microsoft में क्या ही पढ़ेंगे? Microsoft इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? अच्छा, वैसे we know CEO is Satya Nadella. Okay, again an Indian origin. I don't call these guys Indians. These are not Indians. These are Indian origin people. यहाँ पैदा हुए थे, 50 साल से उधर ही हैं, तो वो इंडियन नहीं है.
Microsoft in India. Okay, Microsoft Corporation in India, one of the fastest growing subsidiaries of Microsoft Corporation Global, the worldwide leader in software services and solutions. हमें तो पता है Microsoft क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, राइट? विंडोज बनाता है, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस टैब्स आते हैं, अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट राइट नाउ, राइट? माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप्स आने लग गए हैं, काफी कुछ कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आउटलुक, मेल सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट का टीम्स यू वुड हैव यूज्ड, everything is Microsoft, right? LinkedIn has been bought by Microsoft. Microsoft ने खरीद लिया LinkedIn. Cool. You will study this. I know you will study the portfolio, the philosophy and vision. I'm not just repeating that. I think I'll utilize the time in telling you what is more important from an exam perspective, right? Portfolio. So I can assure you 80% of the questions, देखो 80% questions from this chapter will come from two things, ठीक है? Number one is headquarters and names of CFOs and CEOs. Number one. Number two is portfolios, ठीक है? हर कंपनी का पोर्टफोलियो दिया हुआ है, हर कंपनी का पोर्टफोलियो दिया हुआ है. That is the biggest area from where you will get the maximum amount of questions, ठीक है? This is where you will get the maximum amount of questions from, which is portfolio of the company, ठीक है? And second, आपको पहले मैंने बताई दिया है, names and headquarters. So portfolio miss मत करना, बाकी सब चाहे चैप्टर में छोड़ दो. Even if you're not studying rankings, you will not be able to answer one or two questions. That should be fine. But portfolio मत छोड़ना दोस्त, portfolio जरूर पढ़ के जाना, ठीक है? Correct. Xbox है ना Microsoft का, MS Office, super. Okay. Any questions? No. Okay. That means this company makes a copyright of this. Yes, you have to register that as a copyright. You have to pay a fees. You have to buy a trademark of your company. तभी तो ये खर्चा है, तभी तो आपका asset बनेगा, because you have invested in that brand or in creating that brand. OS is operating system, दोस्त. OS is भूमिका, it is operating system, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ी सी रह गई अब तो. लेट्स गो टू नेस्ले. नेस्ले का सबसे बड़ा प्रोडक्ट कोई बताएगा मुझे? नेस्ले का सबसे बड़ा प्रोडक्ट इंडिया में कौन सा है? विच इज द बिगेस्ट प्रोडक्ट ऑफ नेस्ले इन इंडिया? मैगी. ये देखो सबसे पहले आया है, भूखे लोग सबसे पहले आए हैं. मैगी. What else? Maggie is the right answer. Let's see. Let's wait for others. Maggie, coffee, Maggie, coffee, Maggie, coffee. Nestle की कॉफी भी है, Nescafe, right? Maggie भी है, KitKat भी है. Very good. ठीक है? You know stuff about Nestle. It's a Swiss company. स्विट्जरलैंड में है भाई हेडक्वार्टर, ठीक है? 1866. चेयरमैन पॉल बुल्क. अब मेरे आई एम जस्ट कॉल हिम बुल्क, बट प्रोबेबली कोई अलग बुल्के भी हो सकता है. वी हैव टू फिगर आउट, राइट? वेरी टफ नेम्स. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उल्फ श्नाइडर. ये दिस आई नो, श्नाइडर, राइट? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फ्रैंकोइस जेवियर रॉजर. ये सब एमसीक्यू आएगा, नाम लिखने नहीं आएगा तो टेंशन मत लो, ठीक है? इट्स गोइंग टू बी एमसीक्यू ओनली. It's a Swiss transnational food and drink company. It's the world's largest, दुनिया की सबसे बड़ी food, nutrition, health and wellness company है, right? It has been the largest food company in the world. Nestle serves in 2000 plus brands across the globe. It has 418 plant facilities in 86 countries, with its products available in 191 countries. ठीक है? Awesome. Brands तो हमको पता ही है दोस्त. Nestle Waters, ठीक है? It's the leading producer of bottled water in the world. आपको पता था क्या ये? Employing more than 34,000 staff at 100 production sites in 35 countries globally. अब देखो, इंडिया में तो अपना बिस्लेरी है, इंडिया में तो अपना किनले है, बट बाकी पूरे यूरोप में, इन एंटायर यूरोप,
नेस्ले का पानी बिकता है, ठीक है, नेस्ले का पानी बिकता है, ठीक है, पूरे यूरोप में, लाइक एक्वा, पैना, एक्रेल, बुकस्टॉन, पेरिया, प्योर लाइफ, सैन पेलिग्रीनो, साओ लोरेंको, विटेल, ये सब देखो यूरोपियन नाम है सारे. ऑल दीज इट हैज 52 वाटर ब्रांड्स, 52 वाटर ब्रांड्स हैं, ठीक है. देन इट हैज सीरियल, जैसे आपका कॉर्नफ्लेक्स होता है, म्यूजली होता है, राइट. यू हैव, वी हैव दिस, व्हाट डू वी हैव, चोकोज है, चोकोज, ये सब सब नेस्ले की जैसे. नेस्ले हैज अ लॉट ऑफ सीरियल्स आल्सो. देन हेल्थ साइंसेस, देन यू हैव मैगी, डॉग. इट हैज पेट केयर प्रोडक्ट्स, जैसे अपना यहाँ पे पेडिग्री है, राइट. वैसे नेस्ले के इतने सारे डॉग, काउ, कैट प्रोडक्ट्स इट हैज. देन नेस्ले नेस्प्रेसो, व्हिच इज कॉफी, right. Nescafe Gold, Nespresso, Cappuccino, Classic, all these products are from Nestle, right. बहुत कुछ है नेस्ले का, तो बहुत कुछ है. कैडबरी भी है. कैडबरी आई थिंक इज डिफरेंट कंपनी है, नेस्ले की थोड़ी ना कैडबरी है. कैडबरी नेस्ले की है? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक कैडबरी इज अ डिफरेंट कंपनी, जितना मुझे पता है. नहीं, ORS आई एम नॉट श्योर यार. समीर, यू विल हैव टू स्टडी ORS क्या है. इट्स एन MCQ बेस्ड एग्जाम. इट्स एन MCQ बेस्ड एग्जाम. गुड मॉर्निंग. आधा सिलेबस हो गया है. व्हाट इज कार्नेशन? कहाँ पढ़ रहे हो रेहान? कार्नेशन कहाँ पढ़ रहे हो? टेल मी, गिव मी दैट एंटायर सेंटेंस. वेयर आर यू स्टडिंग कार्नेशन? Where are you studying carnation? Give me that full sentence. I'll help you कि carnation क्या. I know what is carnation, but आप कहाँ पढ़ रहे हो वो मुझे जानना है. You will study all of this, right? Major acquisitions, joint ventures by Nestle. Correct? Cadbury is a different company. Cadbury तो Nestle की नहीं है. I was right. Cadbury is different, right? Absolutely. It's a different company. Samir Singh portfolio में कैडबरी है. किधर है कैडबरी दोस्त? किधर पढ़ा आपने कैडबरी? बताओ. हो सकता है we might be wrong, you might be right. रुको, हमारे पास भी कंट्रोल F है. पढ़ते हैं कैडबरी कहाँ है. दोस्त कैडबरी तो कहीं नहीं है. देखो, there is no कैडबरी. ठीक है, let's go to the next one, which is Walmart. Walmart का देसी वर्जन क्या है? मुझे कोई बताएगा? So we'll do that, Saiba. पहले I'm focusing on syllabus. I have a full-fledged quiz, right? All the मतलब 3-4 chapters I want to create. Syllabus हो जाएगा ना, so I'll have more questions to ask. अभी chapter 1, 2, 3 very basic questions you'll get. एक बारी collate कर देंगे ना, then you'll start getting confused कि कौन से chapters है. So chapter 4 के बाद probably I'm thinking we'll do MCQs, right? The first line of portfolio line there is carnation. Nestle में, okay? किधर लिखा है carnation? बताओ किधर है दोस्त? वो कार्नेशन ब्रांड है दोस्त. कार्नेशन उसके ब्रांड का नाम है, उसका मतलब कुछ नहीं है. दिस इज अ ब्रांड नेम. जैसे नेस्कैफे है, मैगी नूडल्स है, स्मार्टीज, नेस्क्वेक, स्टोफ्लर, विटेल, मिल्कमेड. कार्नेशन कोई उसकी चॉकलेट का नाम होगा. ब्रांड नेम आगे लिखा तो है. ये देखो, पूरा पढ़ा नहीं, पहले कंफ्यूज हो गए. आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स ऑफ नेस्ले. खुद ही आंसर दिया हुआ है, पूरा तो पढ़ो. ठीक है, डीमार्ट. दैट इज राइट. वॉलमार्ट का देसी वर्जन इज डीमार्ट. व्हाट डीमार्ट डज इन इंडिया, वॉलमार्ट डज इन US एंड चाइना. बेसिकली चाइना, US भी नहीं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका दोनों में. So Walmart is essentially the D-Mart of North America, South America and China में भी काफी बड़ी market है उनकी. So, but major markets for Walmart are North America, which is basically Canada and US, and South America, which is like your Brazil, Argentina is there, Chile is there, right? So all these big nations in South America, Mexico, Chile, Argentina is there, and a lot of other countries there. Walmart वहाँ का D-Mart है.
और यूएस और कनाडा का भी डीमार्ट है विच इज वॉलमार्ट. ठीक है, नाउ यू विल गेट टू नो वॉलमार्ट इन इंडिया. देखते हैं, ये देखो वॉलमार्ट इन इंडिया. Walmart in India owns and operates 21 best price modern wholesale stores. The first one opened in Amritsar in 2009. Krish Iyer is the president and CEO of Walmart India. ठीक है. It launched B2B e-commerce platform and extended its best prices members. Right now, 81% of Flipkart, 81% of Flipkart Walmart ने खरीद लिया है. ठीक है. 81% of Flipkart is now owned by Walmart. It is not DC version of Flipkart. Flipkart तो e-commerce कंपनी है. Walmart के stores हैं, physical stores होते हैं, जैसे आपके डीमार्ट का स्टोर है ना, Walmart वैसा है. ओके, Walmart वैसा है. डीमार्ट अब डीमार्ट से 50 टाइम्स बड़ा होता है Walmart, बिकॉज वहां पे स्पेस भी उतनी ज्यादा है. राइट, सो डीमार्ट इज DMart, I don't know what the DMart ka D stands for, Himanshu. You'll have to Google that. I don't know. Maybe Desi Mart. I'm just guessing. I don't know. Okay. But the American version of DMart is Walmart. ठीक. With this, आपका पूरा chapter number 3 complete हो जाता है. Right? Your chapter number 3 is completed with Walmart. ठीक है. Now, let us spend 5 minutes on any questions, confusions, anything that you want to ask इस chapter में क्या पढ़ें, क्या confusion है. I'll solve that for the next 5 minutes and then we'll go to chapter number 4. ठीक है. I'll stop sharing now. I'll be just there on the screen while you can ask your questions and I'll be opening chapter number 4 की PPT meanwhile. ठीक है. But you can ask your questions, ask your doubts. Bala Sanjana, who is Krish Iyer? Krish Iyer is Hrithik Roshan. Krish. It's written there, Bala Sanjana, right? It's written there. Krish Iyer is Walmart India CEO. लिखा तो है वहां पे. It's written in the study material. That is what we studied. Krish Iyer is the CEO of Walmart. It's Damani Mart. Okay, so acha, so from the owner's name Damani Mart they have taken. Got it. That's a new thing for me also. आज तक मैं भी सोचता था ऐसा क्यों D-Mart है. Today I also got to know why is it called a D-Mart. It's called Damani Mart. Interesting. अच्छा है. Okay. Imperial Bank. SBI started as an imperial bank. फिर वो independence, then we got independence, we became republic. Government owned it, then RBI owned it. RBI से government ने खरीद लिया. तो जो imperial bank था वो SBI बन गया है अब, right? नेत्र, वाई आपने वॉलमार्ट क्यों नहीं देखा? क्योंकि बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है. इट्स वेरी फ्यू. हैदराबाद में भी एक वॉलमार्ट आई थिंक. अब तो आइकिया खुलने लग गए हैं बहुत ज्यादा, है ना. आइकिया इज नाउ फेमस. Sam, I said that engineer IoT बनाते हैं, so why can't we do that? We are what are that dash are the CAs doing? What are the CAs doing? The financial part of it. IoT से पैसा कैसे कमाना है वो आपको CA बताएगा. आप कैसे कैसे क्या क्या मॉडल से पैसे कमा सकते हो. What should be the pricing? That is what a CA does. Darshit, that's an interesting question. Which company is Fortune 500 में number 1? Walmart is number 1. Amazon, Apple, Walmart इनके बीच लड़ाई होती रहती है. कभी कोई नंबर 1 होता है, कभी कोई नंबर 1 होता है. Zeba, you have to go by the study material because देखो study material जो publish होता है it keeps on changing but it changes after 2 attempts. ठीक है, 1 साल बाद things revise because it's a long process. सब कुछ नया print करना पड़ता है, students तक पहुंचाना पड़ता है. So इसके बीच में लोग तो change हो सकते हैं, CEOs and CFOs, but from an exam perspective
The latest study material relevant for your attempt is the right answer for you. ठीक है, जो स्टडी मटेरियल, लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में जो आंसर है वो आपका आंसर है. एशियन पेंट्स लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी क्योंकि सर उसके शेयर्स भी सेल हो रहे हैं. एब्सोल्युटली यस, यू आर राइट समीर. Flipkart has its headquarters in both Singapore and Bangalore, but they're answered Singapore only. Why? Because the corporate headquarters is in Singapore. The Indian headquarters is in Bangalore. SBI is not a private company. मैं कह रहा हूँ वो कंपनी नहीं है दोस्त. I'm saying Saima, SBI is not even a company. वो कंपनीज एक्ट के अंदर आता ही नहीं, उसका अपना एक एक्ट है. SBI has its own act. वो कंपनीज एक्ट में आता ही नहीं, so it's not even a company. It's just a bank. It's not a banking company. It's a bank. This is break only, right? और कितनी ब्रेक चाहिए? ब्रेक ही तो चल रही है. Is Walmart a holding company of Flipkart? Yes. What else? If no doubts, how do we revise chapter 3? I told you, portfolio miss mat karo. Do not skip the portfolio part of the companies. Remember the names and headquarters. Baki internal itna deep mein, if you don't have time, you can skip. I'm telling you honestly, if you do not have time, you can skip the beach ka content, but portfolio, do not miss portfolio. Do not miss the names and dates and headquarters. Those are the most scoring areas from this chapter. Okay? IKEA is the best. I think you have to go to IKEA to figure out. It's an interesting place. It's a very fun place, but costly also, right? But okay, some things are really nice there. समीर, IoT से पैसे कमा तो रहे हैं, और कितने पैसे कमाने हैं? इंटेल गरीब कंपनी है क्या? IBM गरीब कंपनी है क्या? They have billions and billions of dollars in revenue. कमा रहे हैं वो लोग पैसे. Great, Pratik. Thank you. Flipkart and Amazon both are private companies. In India, yes. In India, yes. Ranks, देखो, if you have time, Sanchita, I'll be honest with you. If you do not want to even lose 1 or 2 marks, like 2-3 marks भी आपको lose नहीं करने हैं, study ranks. If you can afford to lose 2-3 marks out of the 40-50 marks you have, it's up to you. You have to decide. Okay, chapter 1 related question. Go ahead, Asha. When the business grows, such an autonomous behavior becomes a limited factor, as the entrepreneur or sole proprietor is required to share decision making and let go control over the business. Simple, Asha. अब आप समझो, think like a business person. When you have a small business, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. आपने एक छोटी सी कंपनी शुरू करी ऑफ लेट्स से गिफ्ट्स की, ठीक है. you're making gifts for people in Diwali or any festivals में आप गिफ्ट्स बनाते हो and people buy gifts from you, ठीक है. Now your business grew, आपका बिजनेस काफी सही चल गया और आपने अपना बिजनेस एक्सपैंड किया. आपने क्या किया? अपने 3 दोस्त और बुला लें. आपने अपने 3 और दोस्त बुला लें and then they also come to be a part of your business, ठीक है. आपने उनको एम्प्लॉय की तरह नहीं रखा है. आपने कहा चलो मिलके इस बिजनेस को बड़ा करते हैं. अब when your business grows, okay, when the business grows, you cannot अकेले take the decisions. आप अकेले सारे decisions नहीं ले पाओगे. आपको बाकी 3 दोस्तों से भी पूछ के decisions लेने पड़ेंगे. This is what it is saying. When the business grows, such an autonomous behavior becomes a limiting factor. अगर आप खुद सब कुछ डिसीजन लोगे, बाकी आपके 3 दोस्त कहेंगे क्या ये दादागिरी कर रही है, हमें तेरे साथ काम नहीं करना है, राइट? सो इट बिकम्स अ लिमिटिंग फैक्टर. दैट मीन्स वो आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है. इट बिकम्स अ बैड थिंग फॉर यू. एंड दैट इज व्हाई द एंटरप्रेन्योर, दैट इज यू, जिसने शुरू किया था काम, दे हैव टू शेयर डिसीजन मेकिंग. बाकी सबके साथ डिसीजंस शेयर करके लेना पड़ेगा, ठीक है. I hope this explains the statement.
You got to know something new in class. Cytofil is a Nestle product, है ना? ये देखो. Very new things you get to know from these chapters. जैसे मुझे पता चला दमानी मार्ट है वो. पक्का गूगल तो मैं करूंगा, ये कोई मजाक ना कर रहे हो. मैं कहीं बोल दूंगा दमानी मार्ट, मजाक उड़ जाएगा. ठीक है. आई थिंक इट्स दमानी मार्ट ओनली हो सकता है. Simon, what is your question? I answered it. I think I answered your question. Flipkart, Amazon, private. मैंने बोला yes. In India they are. Lakshita, we're going to chapter number 4. Just like the history of India and before to after 47. That is right. We'll study about that. Is Titan company an Indian company? Yes. Is SBI can lie in statutory company as they are not regulated by IFC but by banking? आप कह रहे हो SBI can be liable in statutory company? नहीं, वो उसको SBI एक्ट के अंदर पनिशमेंट मिलेगी अगर कुछ मिलना है तो. It's दमानी मार्ट. ठीक है साक्षी, got it. It's दमानी मार्ट. Cool. Let's go to chapter number 4. Give me a yes, give me a thumbs up, give me an okay, give me whatever you want to. Let me know if we can go to chapter number 4. काफी छोटा सा है. We have 40 minutes right now. We can quickly finish this. I think 40 मिनट में कर सकते हैं. If you guys want to, I can finish this in 40 minutes. Very small chapter. और बड़ा interesting है. इसमें हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे and we'll figure out कि यार देश ने why did our country take such decisions, right? Why the government had to take such decisions? Reason क्या था? History पढ़ेंगे थोड़ी सी. I'll tell you some interesting facts from history which I know, which are not there in the syllabus. तो बड़ा ही छोटा सा but बड़ा ही मजेदार चैप्टर है. Cool. Okay, let's go. पॉलिसी पढ़ेंगे सौरभ. What is policy? इतना बेसिक क्वेश्चन पूछोगे दोस्त, 12th पास करके आए हो. इतने बेसिक क्वेश्चंस I really get थोड़ा सा confused कि why are you guys asking such basic questions? Pretty sure you have cleared 12th, right? Cool. Let's go to chapter number 4, which is government policies for business growth. सरकार की नीतियां, right? For people who are asking for Hindi, सरकार की नीतियां for धंधे का बढ़ावा. Okay, government policies for business growth. How is the government supporting businesses in India? आज ये पढ़ेंगे. ठीक है. The chapter is very simple. It is divided into 4 things. First, we'll understand history. कि भाई historically why are we doing this? Historically why are we doing this? ये पढ़ेंगे. ठीक है. Let me just open a markup. Let me go to the markup and here we go. Let's take a yellow. Cool. So we'll start with historical sketch. Then we'll go to specter of government policies. कि कौन से टाइप की गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं. मैक्रो पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक चेंज. वी विल स्टडी अबाउट एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, विच इज एल, विच इज पी एंड दिस इज जी. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ इम्पैक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप के बारे में हम पढ़ेंगे. आपकी पॉलिसीज, सरकार की क्या क्या पॉलिसीज होती हैं. और इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि एंशियंट इंडिया में बिजनेस रिलेटेड क्या होता था, पॉलिसीज सरकार की क्या होती थी, अंडर ब्रिटिश क्या चेंजेस हुए, एंड आफ्टर ब्रिटिश वर like they were thrown out of the country, what did our government do. ठीक है. We'll do all of this. सब कुछ आएगा. All your questions will be answered, all your doubts will be cleared, so be assured on that. ठीक है. Okay, that is right Asha, that is right. माइक्रो मैक्रो वी हैव स्टडीड इन डेप्थ. इससे ज्यादा क्लियर क्या करेंगे शिवांगी. राइट, लेट्स फोकस ऑन चैप्टर नंबर 4. अभी जो रिवीजन है ना चैप्टर 4 का, जब एमसीक्यूज करूंगा आपका सब कुछ खुद रिवाइज हो जाएगा. आपको पढ़ के आना पड़ेगा. राइट, हिस्टोरिक पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया. फटाफट से समझ लेते हैं हम क्या पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. नाउ दीज कपल ऑफ पॉइंट्स बहुत ही मैंने कंसाइज कर दिया है. आई मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू गाइस. ओके, द हिस्टोरिक पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया. ओके, फ्रॉम एंशियंट इंडिया टू द ब्रिटिश. बीच में मुगल आए, दिल्ली सल्तनत आए, डिफरेंट लाइक व्हाट डू वी से डायनेस्टीज आई. हाउ डिड इट चेंज. ओके,
Takshashila and Nalanda University. We'll start from the very beginning of Indian society, wherein there were Takshashila and Nalanda universities, right? There was a time when there was Chanakya, right? Chanakya, we all know, during Ashoka and Ashoka's father's time, there was Chanakya, right? Arthashastra, public policy and economy, the base of government. The government's base was more focused on wars, more focused on taxation, more focused on economy, more focused on public welfare. कि अपनी प्रजा को, एक राजा अपनी प्रजा को कैसे खुश रख सकता है while taking taxes, right? Essentially, a government takes taxes to give out services to you. The government of India is collecting taxes to give you roads, to give you flyovers, to give you good security. Army है देश के पास. ऐसा नहीं है कोई भी देश आके आपके देश पे वॉर कर सकता है. They cannot do that because your tax का पैसा is being used to create an army which is going to protect you as a citizen. It is going to be spent on roads. It is going to be spent on drainage systems. It is going to be spent on schools, education, NCRT, CBSE, ICSE. इन सबको फंड कहाँ से मिल रहा है? हॉस्पिटल्स चलाने हैं, मेडिकेयर चलाना है देश का, कितना कुछ चलाना है, एयरफेयर चलाना है, टेलीकॉम चलाना है, ट्रांसपोर्टेशन चलाना है, XYZ, बहुत सारा काम है सरकार का, and it needs a lot of money. So यहाँ से from the very beginning we are talking about that even when there were kings and queens and Raja and Rania, the concept was same. Collect money from the general public and give out basic essentials to them to keep them happy, right? While you remain in power as the king. वरना लोग कहेंगे यार ये क्या राजा हमसे पैसा कलेक्ट करके खुद पे खर्च करे जा रहा है, right? During the time of Ashoka, then after Chanakya was more focused on taxation, public policy, more focused on how to create a Raja Praja concept, how to create a king and the kingdom, right? What are the essentials, what are the basic rules and principles of a kingdom? वो चाणक्य ने बनाया. Then came the time of Ashoka. Ashoka ने क्या किया? Ashoka went on a lot of wars and then he converted into peace and harmony. Okay, Ashoka के time में the policy was more around peace and harmony. शांति रहनी चाहिए प्रजा में. पैसे का देख लेंगे but शांति बहुत जरूरी है. wars नहीं होनी चाहिए, लड़ाई मारकाट नहीं होनी चाहिए. So the policy framework under his rule changed to policy and to peace and harmony. Then came the Guptas. Right, the Gupta dynasty was very focused on taxation. They wanted to do trade. उनको चाहिए था भाई पूरे country में, पूरी दुनिया में. They used to send their ships to different countries in Indonesia, in Myanmar, in China. ऊपर सामान भेजते थे. नीचे they used to send this stuff to Africa. बहुत सारा trade करते थे. Gupta dynasty was more focused on businesses, their policies, their kingdom, their rules, and under their dynasty, a lot of business people flourished, right? Gupta dynasty बहुत ज़्यादा business oriented थी. Okay, tax and trade पे बहुत focus था. Then came the Delhi Sultanate, right? The Delhi Sultanate, which is, you would see then Razia Sultana or Qutubuddin Aibak, right? You see Qutub Minar in Delhi. That is the time of Delhi Sultanate. There were Tughlaqs, there were this Qutub dynasty. Tughlaqs were there. Razia Sultana was there. All these people were ruling the areas. They were more on stringent tax reforms. बहुत ही strict tax था. आप 100 रुपए कमाते हो, 90 रुपए हमें दे दो. आपको वो गरीबी में रख रहे हैं, right? They saying we will do everything for you. Give us the entire money you earn. Very strict taxation. Feudal system था यहाँ पे. ठीक है? Then came Mughals. Then came the Mughals, which were Akbar. Essentially during the time of Akbar, there was Birbal, and then we had Humayun and Aurangzeb and XYZ. You know the entire Mughal lineage, right? Their focus was more on land reforms. ठीक है? मुगल्स को ना बहुत ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर बहुत फोकस था. देयर पॉलिसीज वर मोर अराउंड लैंड का क्या करें,
They were more focused on agricultural land policies कि land को divide कैसे करें. Now all the terms that you use right now when you're talking about land, जैसे 50 बीघा है, गज है, yards वगैरह तो इंग्लिश का हो गया, right? If you know, you have heard about some property discussions in your family or some friends or something, you would heard about 5 बीघा जमीन, 2 बीघा जमीन, 5 गज, 1000 गज, 1 एकड़, 2 एकड़. All these terms were then introduced or developed, not all, but धीरे धीरे over the period they were more focused on land reforms कि यार land को कैसे बांटा जाए and how do you create income from land. अभी जैसे आप हाउस टैक्स पे करते हो, राइट, योर पेरेंट्स और यू पे हाउस टैक्स होता है, प्रॉपर्टी टैक्स होता है, ये सब मुगल्स लेके आए थे, राइट. मुगल्स स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स कि यार यू हैव लैंड, इस लैंड से आप एग्रीकल्चर से पैसा कमा रहे हो, इस पे रह रहे हो, बट इस लैंड हम ओन करते हैं. I as the Raja or I as the king of this entire kingdom, I own the land. You should pay tax to me on the land you are using. तो वो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए कि यार आपका लैंड नहीं है, ये लैंड मेरा है. I have given it to you to use, right? The new concept लेके आए वो टैक्स लैंड रिफॉर्म्स का, right? Then came the British. मुगल्स को हटा के आ गए इंडिया में British came with educational policies, trade policies, लगान, the taxation, pure taxation, जो income tax act है, right? जो income tax act है, ये British लेके आए हैं कि sections होंगे, ये होगा तो वो होगा. They have sections, they have different entire income tax act बना दिया, parliament में pass कर दिया, right? The Lagan system. You have watched that movie Amir Khan की Lagan, right? दुगना लगान देना पड़ेगा. That is the kind of reforms they brought. Zamindari system लेके आए, foreign trade policies लेके आए. They started formalizing the structure of taxation, of business policies, of government policies in India, right? Education policy लेके आए, foreign trade policy की ये ऐसे होना चाहिए, document कर दिया, and everyone in India, in the land that was controlled by British, has to follow those rules, has to follow that law. उसको बोलते हैं policy. ठीक है? So that these kinds of policies they brought in, and why are we studying this here is because इससे आप समझोगे कि बेस क्या है. When we talk about आज हमारे देश में we have GST, we have income tax, we have Companies Act, we have XYZ small industries, we have Make in India, we have Startup India, we have all these policies. MSME, micro small medium enterprises को push कर रहे हैं. ICI is promoting MSMEs, government is promoting MSMEs, government has women entrepreneurship policies कि all the girls who want to be entrepreneurs उनको 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए very low interest rate पे लोन मिल जाता है. और people who want to start their business in agriculture और rural areas उनको बड़ा सस्ता लोन दे देते हैं, right? कहाँ से आ रहा है ये सब पॉलिसीज, क्यों हो रहा है ऐसा देश में, आज गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? There is a history to it. This is the history to it. वो टूट के बेटर होते होते, राइट, इट इज बिकमिंग बेटर एवरी डे. दे फिगर आउट कि नहीं यार ये चेंज करने की जरूरत है. सो ऑल दीज थिंग्स kept on changing from the very beginning in ancient India through different dynasties. हर dynasty आई, अपना कुछ नया पॉलिसी लेके आई, कुछ नया सिखाया, कुछ नया सीखा, and from there we have now reached a place in India where we have a democratic country wherein we elect our government and they make policies for us, right? You and me go and vote for who we want to be the prime minister. The prime minister and the cabinet ministers then are decided. They decide the president of India. They are the parliamentarians. We elect them, right? हम लोग खुद ही कहते हैं ना, हम मोदी जी को बनाओ, हाँ केजरीवाल को बनाओ, हाँ इनको बनाओ. वोट डालते हैं हम लोग. वोट डालने से then they go and they get into power and they make policies for us. हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं. ये सब यहाँ से आ रहा है. एंशिएंट इंडिया से कन्वर्ट होते होते, बेटर होते होते, वी हैव रीच्ड स्टेज इन इंडिया. ठीक है? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? एनी क्वेश्चन सो फार ऑन दिस? ज्यादा ही स्टोरी टाइम हो गया.
एडवांस टैक्स, इक्वलाइजेशन लेवी, सेस, प्रधानमंत्री सेस आ गया, एग्रीकल्चर सेस आ गया, राइट? all these are not of government policies. What is feudal? दर्शन, फ्यूडल सिस्टम इज बेसिकली लैंड सिस्टम ओनली. जैसे आपका जमींदार सिस्टम्स होता है ना, गांव में एक जमींदार होता है, वो लैंड दे देता है कि आप इस पे काम करो और मुझे रेंट दे देना. दैट इज कॉल्ड फ्यूडल सिस्टम. हाँ, आई थिंक द स्पेलिंग्स वर आगे पीछे. आई वाज टाइपिंग इन वेरी स्पीड, तो स्पेलिंग्स रॉन्ग हो गए शायद, राइट? Zamindari it's a system where we have zamindars, right? You would have heard what is zamindar. Zamindar means the owner of the land. So owner of the land gives the land on rent कि आप use कर लो and give me rent. वहां से वो system आ रहा है. Okay. बीघा is a measurement of land. ठीक है, जैसे 10 सेंटीमीटर बोलते हैं ऐसे लैंड को बीघा में बोलते हैं. What is warfare? Warfare क्या होता है? वॉर क्या होती है? वही वॉरफेयर होता है. जो वॉर होता है, द स्किल ऑफ विनिंग और द स्किल ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर इज कॉल्ड वॉरफेयर. ठीक है. Then what is oligarchic? आप बताओ. You would have studied, I'm pretty sure. ये क्लास 9th CBSE ICSE में हम पढ़ चुके हैं. ओलिगार्की सब पढ़ा हुआ है दोस्त. स्कूल में बहुत कुछ पढ़ाते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते. तभी स्कूल में सब कुछ पढ़ाते हैं. When government doesn't, prime minister doesn't know about these knowledge, so how do they decide such policies relating to tax? मैं तभी तो IAS, IFS, IRS ऑफिसर्स भी होते हैं. यूपीएससी का काम ही ये है, बिकॉज अ पॉलिटिशियन माइट बी द लीडर, माइट बी रिप्रेजेंटिंग द पीपल, but that is why we have bureaucrats also. IAS officers होते हैं, we have officers, not just IAS, a lot of other bureaucrats are there in ministries, right? तो उनको तो पूरी नॉलेज होती है ना कि कैसे पॉलिसी होनी चाहिए. बरकतुल्लाह, वो तो आपको गूगल करना पड़ेगा दोस्त. मैं तो नहीं जानता एक बीघा कितना होता है. Do you get questions from history? Essentially no, दर्शन. पर ठीक है, मतलब पढ़ना तो चाहिए, राइट? हर चीज मार्क्स के लिए तो नहीं कर रहे हम लोग. अंकित, आई जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम, राइट? ओके, नाउ इंडिया एंड इट्स पब्लिक पॉलिसी. देखो, जब इंडिया फ्री हुई फ्रॉम ब्रिटिश, हमने ब्रिटिश तक पढ़ लिया, वी स्टडीड अबाउट ब्रिटिश. नाउ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. Now India had two options. India, when became independent, पहले चाणक्य, अशोका, then Delhi Guptas, Delhi Sultanate, Mughals, ब्रिटिश को जब हमने निकाल दिया, जब ब्रिटिश को हमने यहाँ से लात मार के निकाल दिया, तो क्या हुआ? उसके बाद इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गए. When India became an independent nation, it had two options. ठीक है, इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे. इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे, which means the first one was either they become like United States of America or they become like China. इंडिया की सरकार, which is your नेहरू जी, गांधी जी के पास दो ऑप्शंस थे. ठीक है, सरदार पटेल and all these big freedom fighters, right? All these people had two options. या तो हम यूएस जैसे बन जाएं इकोनॉमी में, या हम चाइना जैसे बन जाएं. Which means when I say US जैसे बन जाएं, when we say US जैसे, that means everything is owned by the people. लोग सारा बिजनेस करेंगे. The government is only going to collect taxes. The market forces of demand and supply, everything is private. सारा धंधा लोग करेंगे देश में, हम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करेंगे. या नंबर 2, we as government control the entire businesses, right?
हम फुल कंट्रोल रखें बिजनेस के ऊपर एंड वी डिसाइड ऑन एवरीथिंग. प्राइस क्या होना चाहिए, क्या बिकना चाहिए, क्या नहीं बिकना चाहिए, राइट? वी नीड टू कंट्रोल एवरीथिंग. दो ऑप्शंस थे. व्हाट डू यू थिंक इंडियन गवर्नमेंट चोज इन 1950? What do you think Indian government chose out of these two in 1950? That is right, Bibu, you're right. But the question is, what do you think the Indian government chose out of these two for us, our country's economy? Okay. I have answers from Barkatullah, Nikita, Mayank has given an answer. Syed has given, Arun has given, Gunjan is saying communism, Chahil is saying China, Barkatullah says mixed, Nikita says mixed, Mayank says mixed, Syed says both, Arun says India opted Russian policy. Gajab. Russia ही उठा लाए दोस्त. Mixed, mixed, mixed. Sahil says mixed. Saima says mixed. Both आधा आधा. Okay. Manvi says public sector preferred. ठीक है. Mixed economy, mixed economy, mixed economy. Mixed economy कि don't ही रहेगा. कि don't ही रहेगा. अच्छा. Mixedism. Mixedism. Hey, this is a new thing. Mixedism. Okay. Communism, socialist, both mix, mix, mix. After 2-3 decades, mixed economy. उससे पहले क्या था? Okay. Ankit says शुरू में तो आपका socialist था, मतलब communism था. Then we changed to mixed. More capital, less communism. Okay. First it's socialism, and after mixed, which is the right answer. Okay. Now what happened was we opted for a mixed economy, but you have to understand this very carefully. Indian government opted for a mixed economy, but शुरू के 10-15 साल they did not focus on private sector. वो सब कुछ socialism, communism ज़्यादा बन गया, right? शुरू के 10-15 साल they were more of communism because the country was very poor. Okay, we just got independence. The British took away everything that they had. British took away everything they had, and now we were a very poor new country. We were a very poor new country. So the government said कि नहीं यार, गरीबों की मदद करना is a sarkar's, like it's the responsibility of the government. We are the elected people. We are the people who the entire nation is trusting, so we need to help them. So उनका focus ना ज़्यादा socialism पे हो गया, that we need to control everything, we need to take care of everyone. But economy essentially mixed economy ही थी, but the focus was more on communism, right? But slowly and steadily we changed, धीरे धीरे करते हुए we created a proper balance. Okay, and in today's time the more focus is on private. We are still a mixed economy, but now our focus is more on private sector. Okay, we are more of consumer, more of capitalism. We have more of capitalism, but we are still a mixed economy. 70-30 बोल सकते हो आप. 70-30 is what we have in India right now. Capitalism versus communism, right? जैसे आपका railways is by government, ठीक है? We studied about all the government companies. जैसे आपने कहा 50% बिजली is done by a government company. Coal, 70% of the coal in India is taken care by a government company. Bijli production 100% by Indian company, Indian oil company. Then GAIL or ONGC. Then like this. What was this? Power Grid Corporation or XYZ Thermal Power, NTPC, right? All these are government companies, which means it's a mixed economy. Bijli 70%, coal 80%, natural gas 70%, pani 80%.
all this is controlled by government companies, which means government is still having control over a lot of businesses in the country, which are very big businesses, right? Very, very big businesses are still controlled by the government. यहां से आपको पता चलेगा अच्छा ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी है. चैप्टर नंबर 3 में आपको समझ आना चाहिए था कि यार ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, बिकॉज अदानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक जैसी बड़ी कंपनीज भी है. एसबीआई जैसा एक बैंक भी है, सरकारी बैंक भी है, राइट? पंजाब नेशनल बैंक जैसा सरकारी बैंक भी है. तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ आर देयर. इट्स ए मिक्स्ड इकोनॉमी. ठीक है. A classic example, if you have to understand a mixed economy, is if you go to a government library, वहां पे आपको एक वेज थाली 30 रुपीज की भी मिलेगी, रेलवे कैंटीन में 70 की भी मिलेगी, एंड इफ यू गो टू अ गुड रेस्टोरेंट यू विल गेट फॉर 250-300 रुपीज की थाली भी मिलेगी. विच मीन्स एज अ कंज्यूमर, विच मीन्स को कितना और कहां से खरीदना है. द क्वालिटी माइट बी वेरी डिफरेंट. ठीक है ना. 30 रुपए की थाली जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी में है या जो 250 रुपए की थाली किसी रेस्टोरेंट में है, द क्वालिटी माइट बी जमीन आसमान का फर्क, बट द प्राइसेस आर ऑल्सो डिफरेंट. सो यू हैव एन ऑप्शन, राइट? नो वन इज फोर्सिंग यू कि नहीं 250 की ही खरीदनी पड़ेगी, नहीं 30 की खरीदनी पड़ेगी. नहीं, यू हैव एन ऑप्शन. यू वांट टू स्पेंड 30, यू वांट टू स्पेंड 70, यू वांट टू स्पेंड 250. You have the freedom, and that is one of the biggest benefits of mixed economy. ठीक है. आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ बियॉन्ड सिलेबस. यू नो व्हाट इज एमआरपी? एमआरपी क्या होता है? व्हाट इज एमआरपी? हर प्रोडक्ट पे इंडिया में देयर इज एमआरपी. व्हाट इज एमआरपी? No, Bala Sanjana, Todarmal and Birmal were two different people. But tell me, what is MRP? इंडिया में तो हर प्रोडक्ट पे एमआरपी होती है, राइट? मैक्सिमम रिटेल प्राइस. दैट इज राइट, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है इंडिया में हर प्रोडक्ट पे. ओके, विच मीन्स इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. इसका मतलब क्या है? सरकार इससे ज्यादा आपको बेचने नहीं देगी, राइट? विच इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी का साइन. हैविंग एन एमआरपी is a sign of mixed economy where the government is saying, see, this is the maximum price you can sell this product at. वो control कर रहे हैं. They're still having control over the prices of the product. It's an open market. It's an open market, but फिर भी सरकार का control है. It's a mixed economy. An interesting fact is in US, if you go to US, if you go to Australia, if you go to Canada, वहां पे एमआरपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. इफ यू पिक अप एनी प्रोडक्ट, यू गो टू अ स्टोर, यू पिक अप एनी प्रोडक्ट, वहां पे एमआरपी नहीं होता है. द प्राइजेस आर सेट बाय द शॉपकीपर और द शॉप ओनर्स और द स्टोर ओनर्स देमसेल्व्स. अगर आप कैडबरी की चॉकलेट उठाओगे ना, उस पर एमआरपी नहीं होती है. इंडिया में तो आपको दिखेगा एमआरपी 20 रुपए, तो आप शॉपकीपर को 20 रुपए देके आ जाते हो. यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, देयर इज नथिंग एज एमआरपी. वो खाली होता है, वहां पे कोई प्राइस नहीं लिखा होता. द शॉपकीपर दे पुट स्टिकर्स देमसेल्व्स कि दिस इज फॉर 20, दिस इज फॉर $3, दिस इज फॉर $4. जितने का उनको बेचना है वो बेच सकते हैं. यू एज ए कंज्यूमर हैव टू डिसाइड कि कौन सी शॉप पे सस्ता मिल रहा है मेरे को, मैं वहां से खरीदूंगा, और इफ दिस प्रोडक्ट मेक सेंस टू मी और नॉट. वहां पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है एमआरपी का. सिर्फ इंडियन कॉन्सेप्ट है. बिकॉज वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी. बिकॉज वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट? यस, गवर्नमेंट डिसाइड्स एमआरपी. गवर्नमेंट हैज मैंडेटेड एन एमआरपी. इट डजंट डिसाइड, इट गिव्स यू गाइडलाइंस. ठीक है, गवर्नमेंट ऐसे बैठ के नहीं बोलती है मैगी 12 रुपए की कर दो, मैगी 14 रुपए की कर दो. इट गिव्स गाइडलाइंस, एक रेंज देती है, इसके बीच में होनी चाहिए, फेयर प्राइस होना चाहिए. ठीक है, एक फेयर प्राइस होना चाहिए, वो दैट इज व्हाट गवर्नमेंट सेज, राइट? अब ऐसे तो आप कहोगे यार गुची जूते बेच रहे 80,000 रुपए के, राइट? और शनैल इज सेलिंग अ बैग फॉर 3 लाख रुपए का शनैल का बैग है, ये कैसा प्राइस हुआ? दे कैन,
That's a luxury brand. If you can prove the price of your product, people are still buying it, right? They have created a demand. 4 लाख रुपए का बैग है, 3 लाख रुपए का बैग है, लोग तब भी खरीद रहे हैं. They have created a demand. It's a fair price. It's a fair price for the potential consumer. आपके मेरे लिए नहीं होगा, but जो खरीद रहे हैं उनके लिए it's a fair price. That is why they're buying. Right? So MRP is not set by the government. It is more like a guideline by the government. Okay? और बाहर ऐसा कोई concept नहीं होता है. Because they are more of capitalist economies. Right? कुछ नया पता चला आज. Cool. Very simple table. I'm not going to explain this. हमने पढ़ लिया ये, ठीक है? We have studied this. I just told you when we started, we were more focused on, ये देखो, we were more focused on socialism, and finally we turned into more of capitalism. 1990s तक आते आते हमें लगा यार थोड़ा हमको capitalism पे फोकस डालना पड़ेगा, हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, राइट? और इसके बारे में पढ़ेंगे कि when we converted into more of capitalism, more of capitalist economy, what happened. ठीक है? Now ये हमें समझ आ गया कि गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसीज, गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग हेल्प, और लाइक वी टॉक्ड अबाउट स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और ऑल दीज इनिशिएटिव्स दैट द गवर्नमेंट इज पुटिंग फॉर बिजनेसेस अक्रॉस द कंट्री. इस सब के से बिजनेस को क्या फायदा है? एज अ बिजनेस पर्सन, व्हाट शुड यू डू? यू टेल मी. इट्स अ क्वेश्चन टू यू. द क्वेश्चन टू यू इज, व्हाट एज अ बिजनेस पर्सन शुड यू डू with government policies? ठीक है? What as a business person you should do with government policies? आपको क्या करना चाहिए government policies को लेके as a business person? What is commanding height? Means that being at the top of your industry, business, job, whatever it is, you have a commanding height. Government gives subsidies also. Mixed economy है दोस्त, लक्ष्य था. Mixed economy है. सरकार सब्सिडी भी देगी when it feels that the common person के लिए MRP बहुत ज्यादा हो गई है. Like cylinders, like gas cylinders, 1400 rupees for a cylinder. So government says ठीक है, 400 रुपए की सब्सिडी देते हैं, आप 1000 रुपए में खरीद लो, 400 रुपए हम आपको वापस कर देंगे. सरकार करती है ये. It's mixed economy. It's mixed economy. The question to you is, as a business person, what should you do with government policies? क्या करना चाहिए? You have to analyze the impact of your government policy on your business. As simple as that. आपको government policy का impact on your business analyze करना है कि यार ये कोई नई चीज सरकार लेके आ रही है, इससे मेरा बिजनेस कैसे इम्पैक्ट होगा, मुझे क्या फायदा होगा, मुझे क्या नुकसान होगा. अब नहीं आती सब्सिडी. वी जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. अब सब्सिडी बंद कर दी एलपीजी की, राइट? यू हैड टू सरेंडर योर सब्सिडी. अगर आपने सरेंडर किया तो नहीं आएगी, नहीं किया तो आएगी. To analyze the opportunity or threat, right? You have to analyze the government policies to identify opportunities and threats that are being created for your business. एक example लेते हैं. GST rate. So let's say I'm just giving you very basic hypothetical example. You are a producer of jackets, ठीक है? आप फैशनेबल जैकेट्स बनाते हो, आपका बिजनेस है लेदर जैकेट्स बनाने का, ठीक है? लिसन टू दिस केयरफुली अगेन. You have a business of producing leather jackets. The GST rate right now on leather jackets is 5%. The GST rate right now on leather jackets is 5%, let's say. Now the government issues a notification and says from today, the GST rate for leather jackets is 20%. Is this a threat or an opportunity for your business? Balasan, I was saying for LPG cylinders, the government gives you subsidies, right?
You buy a cylinder for 1400, the government gives you back 400 rupees in your bank account. That is a subsidy, which is a government policy of a mixed economy, of a mixed government economy. The question right now I have is, you are leather jacket manufacturer, 5%, 5% GST was earlier. Now the government says the GST on your product is 12%. Is this a threat or an opportunity for your business? Majority of you are saying threat. Balasanjana, how is this an opportunity? Please explain. If like, why do you think it's an opportunity? Threat, I can understand why it's a threat, because it will increase the price for the consumer, right? 100 rupees for your product, 5% GST, the consumer pays 105 rupees. Your product you keep at 100 rupees. Now the consumer has to pay 20 rupees more, 120, bina kuch kiye, 15 rupees, 15 rupees, the price increases for the consumer. The consumer might not want to buy your product now. Or you will have to sell your product at 80 rupees, फिर वो 20% करके 96 rupees का होगा. You have to reduce the price then, which is a threat to your business, right? It's a threat. That is right. It's a threat for your business. Another example, same example. You are a leather jacket manufacturer. The government says import of leather jackets from China is banned from today. You are a leather manufacturer in India, and the government says import of leather jackets from China is banned from today. Is this a threat or an opportunity? मैं कंज्यूमर रिफंड नहीं ले सकता. बिजनेस लेदर जैकेट कब से बिजनेस एक्सपेंस हो गया दोस्त? जीएसटी रिफंड सिर्फ बिजनेसेस को मिलता है. ऐसे तो आप कहोगे आई गो टू मैकडॉनल्ड्स में से जीएसटी लगाता है, मैं जीएसटी रिफंड ले लूंगा. लिया है कभी? Opportunity. That is right. It's an opportunity. When the import of leather goods or leather jackets from China is banned by the government, that means अब लोग सिर्फ I have more people to sell my product to, right? I have more people to sell my products to, which is an opportunity for me, right? It is an opportunity for me, right? ठीक है. I think before we go to the next topic, what we'll do is we'll pause here for today. It's already 1 o'clock. Okay. What we'll do is we'll pause here and we'll spend another 2 minutes for any questions. I don't want to get into again because I think there are a couple of topics. Time lag jayega. I would want to stop here and think about again any confusion, any topic anything that is confusing or any topic that you still think yaar ye samajh nahi aaya. Let us talk about only concepts, okay? Not word meanings or vocabulary. Not vocabulary, only this. I've opened the door. The door is open. ज़्यादा तेज होगी, घंटी लग रहा है. No, you can, Aisha. It's an opportunity because you can still produce jackets. Import of leather is not banned. Import of leather jackets is banned. तो अब आप खुद जैकेट बना रहे हो ना इंडिया में, तो आपको opportunity है. I'll stop the session here today and we'll talk about any questions or anything that you have. We're not going further with the chapter. We're just stopping here. देखो बार-बार बेल बज रही है अभी. Okay, so if raw leather is banned, then it is a threat. अगर raw leather ban हुआ है, then it is a threat for your business for sure. Right? What are macro variables? Macro variables are macro environment के components. Simple.
Okay, how do fiscal policies impact business? Fiscal policy means interest rates, right? Interest rates are when the interest rates change in the economy, it is either a threat or an opportunity for your business. ठीक है, अगर लोन सस्ता मिल रहा है या लोन महंगा मिल रहा है वो तो अपॉर्चुनिटी या थ्रेट है ना बिजनेस की आपकी. Chapter 3, portfolio, dates and names, the most important topics in chapter 3. All countries में इंडिया में ही मिक्स्ड इकोनॉमी है क्या? One of the biggest economies which is mixed economy is India. आप ऐसा समझ सकते हो, right? A lot more countries have it, but India is one of the biggest countries to have a mixed economy. After becoming a CA, you can do any kind of business that you want to. Can I complete my CA journey with job as I'm still working that? You can, Mayank. Absolutely. Time manage karna padega, but you can do everything that you want to, right? Time management is something that you'll have to figure out. Baaki sab to ekdam sahi hai. How was the economy of India when India got freedom? Ab sab kuch to wo leke chale gaye, all systems, everything. Now think about this, that now you have to manage this your entire house. It becomes difficult, right? So wahi hua jab ekdam se British were controlling India, they left. Now everything was to be controlled by the netas or the heads of the country. So it became a little difficult. Fiscal policy is tax subsidy policy of government. Monetary policy is interest rate policy. See, fiscal policy essentially, in book you would have read about that, but when you go beyond up intermediate, final, aage padhoge, essentially when we talk about fiscal policy, right, I'm just talking about from a perspective of a business. It's not just about the money flow. Monetary policy is more about money flow. Fiscal policy, जैसे आपका RBI है, SEBI है, all these will come under fiscal policy, right? You will get taxation there, you will get budgets there, all these startup India, all these government policies, all these are part of your fiscal policies. I hope so. I am just making them wait. There are all these questions in the last session, all these questions about how to study, where to study from, and how to do what, how to get good articleship. I've already said last session, be active on the last session. 2 घंटे सिर्फ गप्पे मारेंगे, right? And another thing, before we leave, before I end the class for today, right, I hope all the doubts are cleared, all the questions are answered, and tomorrow is a holiday. Tomorrow we don't have a class. We have next class on 15th, which is the next Saturday. Uske baad Saturday Sunday hoga till 29th. I think we have the classes till 29th of October. Someone was asking, right? Tomorrow is a holiday. Enjoy your Sunday. I'll also enjoy my Sunday. You also enjoy your Sunday. We'll see you next on Saturday. We'll start from here. The government policies, chota sa hai. For 30-40 minutes में we'll complete chapter number 4 हो जाएगा. We'll have some good information for you as well. And then I am thinking we will do MCQ test as well. ठीक है? We will do a small MCQ test of chapter number 1, 2, 3 and 4. ठीक है? 30-40 minutes का we'll do that as well. And let's see अगर chapter 5 शुरू कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे तब भी चलेगा. But chapter 4 complete करेंगे and we'll do a small MCQ quiz. Okay, so be there on next Saturday. Tomorrow is a holiday. Have a happy Sunday, right? All the questions, meaning of heavy vehicle manufacturer, Gurleen simple English, वो trucks बनाता है, ठीक है? Cool. Or neoliberal and everything. I'll answer this in the next session. I don't want to take more of your time today. It's already 1 o'clock. I'll see you in the next one. See you on next Saturday, right? All right. Let's end the class today. I'll see you on the next one. Thanks.